Yes, we are Indians. The reason behind mine and surely most other teens' confidence behind saying this is BRS. We thank Honorable Dr. Kiran Bedi ma'am for providing us this golden opportunity. BRS is a platform where one can know and tell about the role of unsung heroes in our freedom struggle. It's also a platform where curious questions find their answers through Dr. Kiran Bedi ma'am. My hobbies include playing piano, singing. I also enjoy playing badminton, public speaking, and painting. Here are a few of my artworks. Thank you. Hello, I am Vidhi Dikshit, and some of my favorite hobbies are reading books, conversing with people, crafting, and planting. And these are some of my favorite books. My favorite hobby is reading. I personally enjoy reading a lot because it helps me gain perspective about how the world is and how I can become a better person. I have learned so many things through books and by reading that I cannot even express them. Some of the books that I have read are Anne of Green Gables, then Secret Garden, and Scary Stories to Tell in Dark. Hi, my name is Muskan Sharma. My hobbies includes to play badminton, to dance, listen music, and traveling. My favorite book is Chanakya in Daily Life. I really like this book because it is about teachings of great Chanakya and how we can implement them in our life and become a better person. The book has teachings which are very valuable in our life and can help us become a great person. That's why I really like this book, and this book has taught me great things in life. My favorite book is Anne Frank's diary. It was written by a 13-year-old girl, Anne Frank, while she was hiding from the Nazis during World War II. The reason I like this book is because even though we face difficult circumstances, something beautiful can still come out of it. Even today, many people still remember Anne Frank by her diary. Thank you. My favorite book is Ignited Minds, written by former President of India APJ Abdul Kalam. This book contains loads of motivation with keep going positive attitude. This book is really motivating for students, and in this book President has written all positive quotes for motivating the students. Hi, my favorite book is Watchless Cave, that is written by Sri Bhakti Vedanta Prabhupada. And this book tells about the scriptural knowledge that is given by Krishna, and no money can buy the scriptural knowledge, as well as this book tells about learn to love and connect ourselves through the God. Women's safety is where a person like me, any woman, feels free to go. Where she wants to go, at the time she wants to go, the place she wants to go. She doesn't have to worry कि अभी अंधेरा हो गया मैं कैसे जाऊं, मेरे साथ कोई जाए, ये मैं ट्रांसपोर्ट ले रही हूं क्या मैं सेफ होंगी कि नहीं. ये डेफिनेशन है उसको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है. शी मस्ट एंजॉय सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं आजाद हूं. जयधारी माँ आप सबको बच्चों, मम्मी जयधारी माँ. आइए, हमारी ऑडियंसेस का स्वागत है. जुड़िए हमारे साथ. Come and bless our children. Mummy, the young children, they're going to talk about a very intense topic. I'm very happy. बात करें जी. Very happy to hear that. Very happy to see their introductions. Welcome, Deborah, Kaushal, Muskan, Vidhi, and Tia. Very nice. Welcome. Welcome to the show.
Happy? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. What's You, your ma'am. feeling? Deborah, how are you feeling? I'm really excited, ma'am. Kaushal, how are you feeling? Ma'am, really excited, ma'am. Really what? Ma'am, excited. Are you excited? All right. Muskan, how are you feeling? Feeling being on the show and you're live, your parents are watching you, your friends are watching you. Ma'am, super excited. And Vidhi, how are you feeling? Vidhi? Vidhi's internet, I think, is a little slow because I see her hazy a little. Vidhi, can you hear me? Yeah, now. Speak. Vidhi's audio is also I'm appears feeling to really be. happy. All right, good. So I hope your internet is powerful enough. Looks like weaker signals. Tia, how are you feeling from Jalgaon? Switch on your mic, Tia. Switch on your mic. You're switched off. Your mic is switched बेटा off. बेटा माइक ऑन करो बच्चे नहीं माइक आराम से कोई बात नहीं, आराम से ऑन करो माइक Tia, switch on your mic. She's also got frozen. She's also got stranded. What happened? नहीं टिया का सिग्नल अभी देखते हैं Even Vidhi's signal is weak. देखते हैं And Tia, you're not switching on your mic. But she's also lost the signal. When you were with the team before you came on the net, you were all functioning very well. I saw that. I saw you rehearsing with the team. And now Tia's back. Tia, switch on your mic. Ma'am, Yeah. am I audible? Yes, Yes. you are. Now tell us how you feel. Ma'am, I feel very pleasure to meet you. Okay, great. Welcome. So, Deborah is from Bangalore, Kaushal is from Delhi, Muskan is from Greater Noida, Vidhi is from Rai Bareli, and Tia is from Jalgaon. So, Saina, I believe you had a session with them. You briefed them, isn't it? Yes, yes, I have, and they're all very young. And आप करो जी बात about this topic with them. Let's see. They're going to share their experiences and their understanding of this topic. Okay, we were always talking about, uh, we were talking about unsung heroes. All these whilst you are on the 104th session. 104th. And till 103rd, we were on unsung heroes, books we've read, saints you've admired, and saints which you follow, saints you've read. So this time we decided to shift the focus to women's security and to see what do you think about it? What's going on? And how do you see yourself growing in this situation? What are how is the school dealing with it? How's your neighborhood dealing with it? How are your parents telling you? What are your grandparents telling you? What are the newspapers and televisions giving you? What are the messages you getting from social media? So I want to understand, dissect this issue. This time we've switched to the subject of women's security, girls' security, your security as you grow up. And we will also have a boy's perspective from Kaushal as to how boys are feeling about it. It'll be nice to hear that we will hear, while girls will tell us their perspective, we will also hear what the boys are saying in the boys' classrooms, etc., of what's going on and what's happening. Vidhi, are you back? Can you hear me? Vidhi, switch on your mic. Your mic is switched off. Yeah. Can you speak? Vidhi? Yes, ma'am. Vidhi? Good, I'm glad. Yes, ma'am. All right, so let me begin with the subject first of all. What do you think, each one of you tell us, and Saina will keep record of that. What do you think is going wrong? What do you think is not right? How do you feel? What do you see which is not going right as children? Okay, your turn, Deborah. What do you think is going wrong? Ma'am, I think that men are taking advantage of women in our country, especially.
How? Ma'am, I've seen on roads how they just start following them, pulling them, taking their purses, making noises. I've been seeing that, ma'am. You are saying that you see men following women or girls, whatever, girls, Yes. women, following them and doing what? Ma'am, they're making fun of them, taking their stuff, trying to make them go with them somewhere. I've seen that. Acha. So they, in a way, chase them, not chase them, they troll them. Yes, ma'am. They troll them. And wanting to do what? Wanting to request them to join them, be with them, or what? Have fun of them? In what way do they make fun of them? Ma'am, they make fun of them by saying by swearing at their face, pulling their Ah, hair. oh my God. Oh, you find them swearing also and hair Yes, pulling. yes, ma'am. Oh my God. Is this all during the evening or during daylight, broad daylight hours? Ma'am, it's mostly in the evening when it's more dark. Acha. When it's dark, they take advantage of the dark. Yes, ma'am. Huh? Is it later in the evening or it's early evening when it's dark, but not midnight, obviously? Huh? Ma'am, by at 7 o'clock, ma'am, I've seen at this time. 7 p.m. sunset onwards. You can say sunset onwards. Yes, ma'am. Hmm. So we will first dissect what is your observation, then we'll come back to how do people respond and what do we do about it. Okay. Kaushal, you're a boy, bete. Now tell us, Kaushal, what do you see as a boy? Because obviously you are seeing others, you are observing other boys behaving. What do you think, Kaushal? Ma'am, your voice is not coming clear. My voice is not coming clear. My voice Yes, is clear. ma'am. Deborah, was my voice clear? हाँ Ma'am, it is clear, ma'am. Is my voice clear? Yes, ma'am. Kaushal, can you hear, ma'am? Can you hear me, Kaushal? What's wrong with him? Even he's lost the signal. He's Mommy, they all have a little topic on which they will talk. yes, They Bete. have I first of all need to understand, yes, but I जी. want to explore first, No, Bete. just sharing that they've come also ready with a few Sure, thoughts on a no particular problem. topic. I जी, come to their thoughts. First of all, I want to understand and read what is their observation. Kaushal, जी. what do you say? Ma'am, can you repeat, ma'am? What do you see happening in the evening, sunset after? How do boys or men behave? मैम मैम जहाँ पर मैं रहता हूँ मैम वहाँ पर तो मैम मेरे पेरेंट्स मेरे को ऐसी चीज़ों से दूर रखते हैं मैम। जो मेरे बॉयज फ्रेंड्स हैं मैम मैंने उनके अंदर ऐसे आजकल अभी तक मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी है। हाँ, तो एज अ बॉय तुमको नहीं दिखता, यस मैम। एज अ बॉय तुमको नहीं पता चलता क्योंकि आपके सामने थोड़ी होगा, है ना? यस मैम। आपके और सामने मैम लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसी चीज़ मैम पता नहीं मेरे को दूर रखते हैं तो। हाँ, ऐसे माहौल में नहीं जाते आप। यस मैम। सो फर्क कितना आया कि डेबरा देखती है एक लड़की होते हुए, ये वो देख रही है, और आप लड़के होते आपको नहीं मिलता देखना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि बॉयज कर क्या रहे हैं, यस मैम। है ना? दोनों की दुनिया में कितना अंतर है। डेबरा देख रही है क्योंकि वो या उसकी फ्रेंड्स या दूसरे, ये बेटे आपने देखा है डेबरा, क्या आपने सुना है? डेबरा, हैव यू Ma'am, हर्ड I've और हैव seen यू and सीन? also heard. हाँ, Ma'am, I've also seen and my friends also have told me about this so she has seen. Deborah, do you understand and Hindi? heard. Ma'am, I understand Hindi, but I'm not able to talk. ओके, ऑलराइट। सो देखो कितना फर्क है दोनों की दुनिया में, लड़कों की दुनिया में और लड़कियों की दुनिया में। लड़कियां ये गलतियां देखती हैं और लड़कों को पेरेंट्स नेचुरली ऐसे गले माहौल में भेजते नहीं, तो वो दिखता भी नहीं। लेकिन बेटे आपने कौशल ये तो सुना होगा कि बॉयज ऐसे मेन करते हैं ऐसे, ये सुना है? यस मैम।
आपने क्या सुना? मैम वो बॉयज गर्ल्स को फॉलो करते हैं। मैम मैंने अभी काफी न्यूज पे वो एसिड अटैक्स देखे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो न्यूज में मैम हुआ। अभी यस मैम वो न्यूज पे काफी वो सेक्सुअल हरेसमेंट, मैम वो वैसी न्यूज आती है। तो जब बेटे आप न्यूज सुनते हो कौशल, आपको कैसा यस लगता है? आप कैसे महसूस करते हो एज अ बॉय? मैम काफी बुरा लगता है मैम कि हमारे सोसाइटी में मैम आज भी इतना ज्यादा डिफरेंस किया जा रहा है बॉयज एंड वुमेन्स में। आपके स्कूल में किस तरीके की किस क्या कोई ऐसी चीजों की डिस्कशन होती है कौशल? नो मैम। अच्छा, तो आपका को एजुकेशन है कि बॉयज स्कूल है सेपरेट? नो मैम ऐसा कुछ सेपरेशन नहीं मैम, सेम स्कूल में मैम बॉयज भी आते हैं गर्ल्स भी आते हैं। तो ऐसी चीजों में डिस्कशन कभी नहीं होती असेंबली में या क्लास में? कि डिस्कशन नहीं होती कि बॉयज और नो ये मैम। बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर क्या है पढ़ाते नो मैम टीचर? क्योंकि ऐसे मैम किस बहुत रेयर आते हैं, तो मैम जो ऐसे जो बातें होती है वो प्रिंसिपल मैम करती हैं, तो स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंच पाती है बातें। तो ऐसी कभी क्लास डिस्कशन या स्कूल असेंबली में या कोई असेंबली में डिस्कशन नहीं होती कि बॉयज एंड गर्ल्स आदमी को से ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, या लड़कों को समझाना कि कभी अपने बॉयज के साथ मिलना गलती नहीं करना? नो मैम। सर नो डिस्कशन। नो मैम आज तक कोई नहीं हुआ। अच्छा, आजकल इतना गंदा क्राइम आ रहा है, इसकी न्यूज के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि ये ऐसा गंदा क्राइम है, ऐसे बच के रहो, लड़के नहीं करने चाहिए ऐसी बात, या लड़कियां को समझना चाहिए, ऐसी कोई कौशल डिस्कशन हुई? नो मैम अभी तक कोई नहीं हुई मैम। आई सी। घर में हुई? मैम घर में मैम जैसे न्यूज चलती रहती है तो बातें होती है। हाँ। तुम्हारे सिस्टर्स ब्रदर्स और हैं? यस मैम मैम मेरी दो सिस्टर्स हैं। बड़ी छोटी? मैम एक मेरे से 15 ईयर्स ओल्ड है और एक 13। तो आपसे बड़ी सिस्टर्स हैं। क्या उन्होंने यस मैम। कभी नहीं आपको बताया कि ऐसे हुआ या ये गलत हरकत हो रही है? आपने कभी उनको सुना कहते? नो मैम। अच्छा, तो घर में अम, सो ऐसी बात की डिस्कशन नहीं होती, और आप ना उनकी कभी उनकी कोई शिकायत घर में शेयर हुई है? नो मैम। क्या उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप टाइम से जाओ टाइम से आओ? नो मैम। अच्छा, वो टाइम से आती है टाइम से जाती है? मैम ऐसा कुछ नहीं मैम, सारे एक साथ जाते हैं या फिर अगर वो बाई चांस कभी लेट हो जाती है तो मेरी मदर उनको ऐसा कुछ नहीं कहती है। एज अ गर्ल ऐसा कुछ नहीं होता। क्या वो थ्री व्हीलर में जाती है, टू व्हीलर में जाती है, कि सिर्फ गाड़ी में ही जाती है? मैम एक्चुअली अभी हमारे घर में कोई टू व्हीलर्स या है नहीं, तो अभी हम थ्री व्हीलर्स या अभी वो ऑनलाइन वो उबर ओला कैब बुक करके जाते हैं बाहर। राइट। और उन्होंने कोई ऐसी शिकायत नहीं घर में आके बताई कि मेरे से कुछ प्रॉब्लम हुई? नो मैम। मम्मी डैडी ने कभी उनको इंस्ट्रक्शन दी आपके सामने कि कोई बात हो तो फोन करना, या वो पहुंच के फोन नहीं करती कि हम पहुंच गए? मैम करती है। दैट सेफ्टी, उसको सेफ्टी कहते हैं, है ना? कि हम मम्मी पहुंच गए। पापा मम्मी कहते होंगे ना पहुंच के बताना। मैम अच्छा, थैंक यू कौशल। मुस्कान, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? You've heard a boy's perspective. Naturally, boy's world is a different world. जो लड़का देखता है, जो लड़की देखती है, दोनों में फर्क है। मुस्कान, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग विच इज कमिंग, क्योंकि जब आपका वर्ल्ड ही डिफरेंट होगा तो आपकी सेंसिटिविटी भी डिफरेंट होगी। मुस्कान, आप? Yes, ma'am. Ma'am, आप क्या first देखते of हैं? all, I would like to say, ma'am, यहाँ पे मैम आई थिंक सो मैम यहाँ पे इक्वालिटी बहुत मैटर करती है। इक्वालिटी तो मैटर करती। आपने ऑब्जर्व क्या किया एज अ मैम यंग गर्ल? यहाँ पे द वर्ड इक्वालिटी इज नॉट टेकन स्ट्रिक्टली। इक्वालिटी, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? जैसे कि
For example, For example, like, ma'am, ma'am, if we take the example of, ma'am, अगर कोई सीएम बनता है, मैम अगर कोई फीमेल सीएम बनती है या कुछ भी बनता है, then इशू हो जाता है. अगर कोई फीमेल क्या करते हैं बेटा, आई मिस्ड योर सिग्नल. मैम अगर कुछ भी मीन्स, मैम लाइक अभी द्रौपदी मुर्मू का एग्जांपल आई विल टेक मैम, अगर कुछ भी वो होता है तो मैम वो कहते हैं कि शी कांट हैंडल. हाँ. मैम एक बड़ा इश्यू बनता है कि यहाँ पे फीमेल, मैं मीन यहाँ पे लेडी कैसे आ गई. जैसे कि कुछ पोजीशन पे या मैम वैसे. दिस सीट वो, हम्म मैम मैम प्लीज ट्राई, मैम प्लीज रिपीट. बेटी, मैंने ये कहा कि आप क्या फर्क देखते हो, जैसे डेबरा ने एक्सप्लेन किया, उसने क्या देखा, उसने क्या समझा, आप क्या देखते हैं लड़की और लड़कों में फर्क सिक्योरिटी में एंगल से, क्योंकि आज का मैम की टॉपिक गर्ल सिक्योरिटी. मैम मीन्स, मैम जब वो बाहर जाती है पहले उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है एंड ऑल. मैम हाँ. उन्हें बताया जाता है, मीन अगर आप पहुंच जाओ तो आप प्लीज एक मैसेज कीजिए या तो फोन कीजिए. हाँ. एंड मैम ये सब आई थिंक सो मैम ये कौशल को नहीं बताया जाता हाँ, बॉयज को नहीं कि बताया आप जाता, फोन. गर्ल्स को समझाया जाता है कि ध्यान रखना. यस मैम. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है मुस्कान. सिक्योरिटी की जो इंस्ट्रक्शन है, गर्ल्स को तो बता दी जाती, बॉयज को नहीं बताया जाता कि जिम्मेवार ये रहना, सिर्फ, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छे रहेंगे. एम आई राइट? एम यस आई मैम. राइट? गुड ऑब्जर्वेशन. कि लड़के को तो एक्सप्लेन नहीं किया जाता, लड़की को एक्सप्लेन किया जाता है. मैम ठीक, आई समझ. थिंक सो अभी तक ये. यस मैम. आप बताओ और क्या अभी तक क्या. मैम इसलिए मे बी कौशल को अभी सब इन सब चीजों के बारे में पता ना हो. हाँ, नेचुरली, क्योंकि उसको बॉयज को ये इंस्ट्रक्शन, हम कौशल की बात नहीं कर रहे इस वक्त, बॉयज की बात करें अब, तो बॉयज को तो नहीं कहा जाता वहां पहुंच के बता देना. यस मैम. लड़कियों को बताया जाए, क्योंकि वो लड़कियों को, पेरेंट्स को डर है कि कोई सब सिक्योर रहे, चिंता रहती है. लड़की की चिंता रहती है, लड़के की चिंता नहीं रहती. ये कह रहे हैं ना आप? यस मैम. और लड़की को इसलिए पहले समझा के भेजा जाता है, और लड़के का समझा जाता है कि वो तो समझदार है ही, वो तो अपनी देखभाल कर ही सकता है. लड़का अपनी यस देखभाल मैम. तो कर ही सकता है. ये कौशल, आपको कुछ कहना है जो मुस्कान ने बोला इसके बारे? यस मैम. मैम ऐसा कुछ नहीं मैम. जब मैं अपने इंस्टीट्यूट जाता हूँ तो मैम मेरे फैमिली मेंबर्स मैम मेरे को फोन देके भेजते हैं, स्पेशली जब मैं पहुंच जाऊँ तो मेरे को कॉल करना, मैसेज करना. तो ऐसा कुछ नहीं है हमारी फैमिली में कि खाली गर्ल्स को ही कहा जाता है. आई थिंक अच्छा, सो. तो आपको बॉयज, एज ए बॉयज स्कूल पहुंच गए ठीक से, फ्रेंड के पास पहुंच गए, आपको कहा जाता है कि बताना. यस मैम. आपके पेरेंट्स आपकी भी चिंता करते हैं कि आप ठीक ठाक पहुंच गए. यस मैम. एक है पहुंच के बाद गाना, एक होता है समझा के भेजना. सो लड़की को कुछ चीजें, बातें समझाई जाती हैं. नो मैम, वो आज तक नहीं हुआ हमारे फैमिली में. वो आपको शायद नॉलेज में नहीं होगा, अपनी सिस्टर नो से पूछना. मैम, वो मेरी सिस्टर्स मैम, मैं अपने सिस्टर के साथ ही मोस्टली टाइम स्पेंड करता हूँ, तो मैंने उनके मुंह से आज तक नहीं सुना ये. ओके, राइट. ओके, उसको. ओके मुस्कान, और कोई चीज ऑब्जर्व करते हो, जैसे वो उसने बोला डेबरा ने कि सड़क पे जाते हैं लोग, फॉलो करते हैं, कई बार बाल खींचने की कोशिश करती हैं, ट्रोलिंग करते हैं. हैव यू एवर सीन इट आल्सो ऑन द रोड, और हैव यू बीन वेरी प्रोटेक्टेड? नो मैम, नॉट टिल येट. सो यू रिमेन वेरी प्रोटेक्टेड, केयर, पूरी केयर. ओके विधि, आपको क्या कहना है इसके बारे में? Ma'am, the worst thing I feel is that it impacts over our education and our freedom. Ma'am, because of this much insecurity and unsafety, we are not allowed to
uh, walk or go anywhere anytime, and even like we want to go to any other city or some place for our education purpose, we are not given that much freedom and all because of so much insecurity. सो आपका कहना है कि लड़की की मोबिलिटी इफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द आसपास इनसिक्योरिटी Yes, ma'am. कंपेयर टू बॉयज. Yes, ma'am. Of course. सो दुनिया लड़के की दुनिया अकॉर्डिंग टू विधि दुनिया बड़ी रहती है, लड़की दुनिया रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. Yes, ma'am. दैट्स अ पॉइंट. एंड जिसकी दुनिया रिस्ट्रिक्ट हो जाए छोटी उम्र में, नेचुरली उतना उसका एक्सपोजर भी कम हो जाता है. Yes, ma'am. Ma'am, it also like our dreams are, caged up because of so much unsafety. And that's done by our parents because they don't want anything bad for us. So they just like put us in a cage. Out of concern for security. Yes, ma'am. Have you seen this happening with your friends? No, ma'am, not actually that much, but ma'am, sometimes like I usually myself I travel wherever I have to go, like something I have to buy for myself or that thing. But ma'am, I feel like if I have to go somewhere for like some where late at night, then sometimes my friends are not allowed, and we are not allowed to go very late or at night, or we are not allowed to go somewhere, or even walk in a park nearby. After sunset Yes, or ma'am. during the day? Ma'am, after sunset. So this is the parents' precaution they take. At least don't go alone by yourself after Yes, ma'am. sunset. And that's exactly what Deborah was saying. That problem happens after sunset. Yes. So parents take precautions to protect you. Yes, ma'am. But traveling की बात अलग है. What about travel? Ma'am, uh, it's also not very safe for us. That's your feeling. So your Yes. feeling of you yourself do not feel safe after sunset. Yes, Is that ma'am. right? Yes. It's also a feeling. It's a pervading feeling. Yes? Yes, ma'am. Okay, Tia, what about you? Ma'am, I feel like the problem is with the deep rooted misogyny in our society because with the growing years, our India is also developing, the whole world is developing. There are many good changes, but still there is some small misogyny, like people are still stereotyping women and men in different categories. Like if we see, I go to schools and coaching, there the boys are good. They do not talk disrespectfully. I am being treated equal there. But at some point, if you see how people talk, they're like, if the work is hard or some manual work is there, they will be like, call a boy. This is not for a girl. If there's some work in household work, they will be like, call a girl. In some of the areas, I have heard that in some of the house or society, in Hindi we call it Samaj, where certain kind of caste people are there. In that, the boys are not allowed to be in the kitchen or household. I've heard it from my friends and I find it very disturbing. I've also heard that in some of the households, women are not allowed to sit on the sofa, which I find extremely horrifying. Like, how is this even possible? I feel if the misogyny and stereotypes are removed, then we can be equal. If a woman also believes in herself then that I'm strong, she can be anything. Like if you see Mirabai Chanu, they are great examples. They have fought with their strength and come to a high point. They prove that woman can do anything and anything if she tries and gets support.
if she's not she's not in, involved in any kind of stereotype and is supported by her family. That's all I would like to say. Now, all five of you have shared your observations, your perceptions, your feelings, how you feel, and what you see around in the society at large. Am I right? Right? What do you think is the way out, way forward? Dobra. Ma'am, to educate the boys and the girls in the same room instead of just educating the girls and leaving the boys out of it. Who should educate equally, boys and girls? Ma'am, Who? ma'am, it should start in our school, ma'am. In what way? For example, if you were a teacher, how would you? What would you do? Ma'am, if I was a teacher, I would first treat everyone equally. And in social even, ma'am, we learned about gender equality. There, our social teacher explained about how we should respect each other. And ma'am, also we learned that housework is unpaid and how women just do work when they're not paid, while as men are doing less work and getting paid. That is the type of inequality we are having right now. What else? That's all I have to say, ma'am. Okay. Kaushal, what should we do? क्या करना चाहिए इस समाज सुधार के लिए? मैम मैम अभी जैसे सीबीएसई ने मैम एसएसटी और हिंदी की नोटबुक में मैम काफी ज्यादा वो चैप्टर्स पढ़वाए, इंक्लूड करा है गर्ल्स इक्वालिटी में। तो मैम जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें काफी लाइटली ले लेते हैं और कहते हैं कि नॉर्मल सी थिंग है कि हम इसे इग्नोर मारते हैं। तो मैम उन्हें डीपली वो बताना चाहिए एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि उन्हें अच्छी तरह समझ आए और फ्यूचर जनरेशन को ताकि सोच पाए कि आगे उनको अच्छी तरह समझ पाए और इंडिया गर्ल्स की सेफ्टी के बारे में सोच पाए और ऐसे डिस्क्रिमिनेशन स्टीरियोटाइप से दूर है। सो आपका कहना है कि किताबों में अगर चैप्टर्स आ गए हैं तो जो कि आए हैं, लेकिन यस उनको मैम। समझाया जाए ताकि उनको समझ आ जाए और बच्चों में इस समझ बढ़ जाए, ये कह रहे? यस मैम। मैम क्योंकि काफी लाइटे रहते हैं बच्चे कि नॉर्मल सी थिंग है, हम हर टाइम सुनते रहते हैं गर्ल सेफ्टी, तो अब ये एकदम नॉर्मल सा इशू बन चुका है, कोई ये देखता नहीं है इसकी तरफ। हाँ, तो सोचेंगे इसका क्या हम ध्यान देना, ये तो हम जानते ही हैं। यस मैम। उससे बिहेवियरल चेंज नहीं आती। सब पढ़ाई का पढ़ लिया लेकिन बिहेवियरल चेंज नहीं आती, जबकि चैप्टर्स पढ़ने से बिहेवियरल चेंज आनी चाहिए। यस मैम। और एग्जाम्पल्स देख के, है ना? यस है ना? मैम। हाँ, ये नहीं आई। सो फायदा क्या चैप्टर पढ़ने का अगर बिहेवियरल चेंज नहीं आती या एक महसूस नहीं होता, सेंसिटाइजेशन बढ़ती नहीं, ये कह रहे? यस मैम। हाँ, सो इसका मतलब बैक टू डेब्रा ने जो बोला, टीचर्स का रोल है, तो पढ़ाते तो वो है ना, तो कैसे पढ़ाएं ताकि सेंसिटिविटी बढ़े, ये ना, ये है ना कौशल? यस मैम। ताकि बच्चों में ये रूटीन चैप्टर ना बन जाए। शायद इसको रोल प्लेइंग में ले लें, इलस्ट्रेशन से ले लें, एग्जाम्पल से ले लें, केस स्टोरी से ले लें, नहीं? यस मैम। हाँ, किस तरीके से पढ़ाएं? मुस्कान, तुम्हारा क्या ख्याल है? व्हाट इज द वे आउट? Ma'am, I think ma'am teacher are also ignoring these types of chapters. Teacher are Oh, taking it lightly. I see. So special classes, special seminars should be designed. Very nice. You people are brilliant. बहुत अच्छी तरह से आप, यू आर रियली हिटिंग द नेल ऑन द हेड कि ये रूटीन चैप्टर्स नहीं है, ये रूटीन नहीं है। अगर ये अच्छी तरह समझाया जाए तो बिहेवियरल चेंज आ सकती है। जैसे कह रहे हो सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, यू कैन कन्वर्ट द होल चैप्टर इनटू नुक्कड़ नाटक।
and make you play the roles. है ना? Isn't it? और कोई बात मुस्कान? और कोई idea? Or else, ma'am, we can do like, ma'am, in a class only, we can make a groups of students, and we can tell, ma'am, teachers to prepare. Yeah. Make it into a drama. Make it into a enact play. Enact a play. ताकि वो दिमाग में याद रहे कि प्ले में ये हुआ था. है ना? Very nice. Vidhi, what do you think is Yes, the way ma'am. forward? Ma'am, in my school, we actually, in my class, my teachers, they ask us to read those chapters and explain and give our point of views and perspectives about that. Yeah. Okay. And I Your, find it to be huh. quite good. Your teachers make you read this and explain. Yes, ma'am. Uh-huh. And keep our point of views and all. So आपकी क्लास में ये पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं. They take it seriously. Yes, ma'am. That's a good thing. What else can be done besides, as it is said, कि अगर हम टीचर्स ऐसे स्कूलों में, आप अपने स्कूल की बात नहीं कर रहे, none of you are generalizing, आपने जो देखा सुना, आप अपनी बात नहीं कर रहे स्कूल की, but I'm just asking you कि आपका और नेक्स्ट व्यू क्या है? एक तो चैप्टर्स को अच्छी तरह पढ़ाया जाए, और Ma'am, the next point of view is that parents shouldn't be overprotective. Ma'am, because mostly parents sometimes they become overprotective and they just don't they overprotect their kids and they don't allow us to do certain things, and it's like they block our way to route to success sometimes, because instead of telling us not to go out at night and all, they should give us safety measures and allow us, because if they will not allow us, then we are just gonna restrict some other person like us. so you can allow your, let's say you want to walk the park, allow you, but go with safety measures. Ma'am, we usually should learn some of fighting skills, and we should keep some objects, sharp objects, or something like that to protect us. Or we should carry some sprays like chili spray and pepper spray like that. So you want to say you go prepared so that you dare. You want to be Yes, ma'am. dare. You want to Ma'am, dare. but it is better that the other person should not misbehave, because Of we course. can't just walk with a backpack for our protection Exactly. over our Exactly. shoulder. So the boy's behavior must change. Yes, ma'am. Correct. Very nice. What about Tia? Ma'am, I feel like apart from schools, teachers in this chapter, I feel like this should be given more coverage on the social media or internet, more influencer with large number of following, because nowadays the youth is mostly active on social media. It should be given more coverage on social media. Different influencers should talk about this, educate their following so that the youth could understand, because nowadays if your parents or teachers are telling something, the youth doesn't mind it, but if they hear something on the internet, they are more likely to follow it. So influencers who can impact should speak about these issues on the Yes. internet. That's what you say. So that क्योंकि they will be heard and they will have an impact. Influencers, right? Any other point? Ma'am, the other point that if we see the parents themselves sometimes do not understand that women are equal to men, so the parents also should be educated. So like in the school seminars they could work greatly, but in TV or any other medium which parents can understand, like in newspaper which they read, there should be more topics about this. The My only point is that
the topic should be given coverage, then the society could get a little bit of thought about it and could change. Very nice. So more of writing articles, etc., so that the papers which are read, they can read. So they can read, they can see. That's what you're saying. Okay. All right. Now, Saina said you had prepared something. What is it that you prepared something for us? Had you prepared? I've had a wonderful discussion with you. I want to thank you. You're very, very bright. Each one of you has contributed something very nice. Tell me, did you prepare anything before I ask you any other questions? Deborah. Yes. Your mic is off. Deborah? Debra, you want to share your thoughts? I have to speak what I want to prepare. There's something wrong with your internet. There's disturbance in your internet. कौशल, आपने कुछ Please प्रिपेयर switch करा? off. Deborah, please switch off because your sound is Ma'am, not. am I audible? No, your internet has noise and disturbance in it. Now speak. Please speak. Ma'am, am I audible? Your internet has Ma'am? disturbance. Your internet has disturbance. Okay, Kaushal, you set it right, Deborah, first. Kaushal, Yes. you wanted to say something? You had something prepared? You want to share? यस मैम। मैम मैं एक चेंज चाहता हूँ कि मैम जो अभी दिल्ली मेट्रो है मैम, उसके अंदर मैम एक स्टीरियोटाइप है कि जो बॉयज की सीट है वो ब्लू है और जो गर्ल्स की सीट है वो पिंक है। तो मैम ये एक थॉट है कि जो गर्ल्स है उसमें पिंक ही अच्छा लगता है, पिंक कलर ही अच्छा लगता है, तो ये गलत चीज है। तो ये एक मेरा थॉट है कि गलत सेंस में जा रहा है ये चीज। सो ये कलर अगर तो क्या कलर कोडिंग करें कि ये विमेन सीट है या क्या कलर कोडिंग करें? मैम चाहे तो सेम ही हो। तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सिर्फ लिख दें ऊपर विमेन सीट? यस मैम। मैम क्योंकि ये गलत सेंस में जाना कि पिंक कलर तो खाली वुमेन को पसंद होगा, तो क्या पिंक कलर बॉयज को पसंद नहीं हो सकता या ब्लैक कलर वुमेन को पसंद नहीं हो सकता? तो आप कह रहे हो कि कलर कोडिंग करने के बाद के बदले सीट पे लिख दे विमेन एंड मेन ओनली? यस मैम। मैम वहाँ पे स्पेशली लिखा होता है कि वुमेन ओनली और नीचे अलग से खाली पिंक कलर ही होता है नीचे खाली सीट्स पे। ये कह तो आपकी व्यू में कलर कोडिंग के बदले लिख दें विमेन एंड मेन, तो जो नहीं Yes, अगर कोई पढ़ सकता तो सीधा ही पिंक नजर आ जाएगा तो बैठ जाएंगे। तो आपका मतलब कहने का कि कलर कोडिंग भी एक स्टीरियोटाइपिंग फिक्स कर रहा है। यस मैम। और कुछ कहना है बेटे आपको कौशल? नो मैम। अच्छा मुस्कान, आपको कुछ कहना है? Yes, ma'am. Ma'am, I would like to say that, ma'am, if we talk about the safety tips for women, ma'am, first of all, ma'am, if I talk about safety tips, ma'am, there should, ma'am, in a school, as I'm a girl, though I'm a girl, so I think that, ma'am, there should be a compulsory classes for karate that every girl should be attend. तो आप चाहते हो गर्ल्स के लिए कराटे सब कंपल्सरी हो इन अ वे ताकि लड़कियां बहादुर बने, Girls, फिजिकली बहादुर बने। yes, ma'am. अच्छा और कोई पॉइंट बेटा उसका? उसका और पॉइंट कोई है? Ma'am, ओके विधि, ma'am, योर टर्न। विधि, Ma'am, as she said, the karate class should be fixed like compulsory. So it's not for everyone. Everyone can't, learn karate. So better than karate class, there should be, spotlighting and eye-opening session. We should teach. We should tell boys and everyone
behave properly, not to misbehave, the way to treat them. And they should tell them that they're also human beings and they should be treated properly. And this karate class being compulsory actually makes no sense, because at some point, you can't, even if you're a black belt in karate, then you can't, uh, prevent the worst happening, even if You you can only have deal with it. karate. Yeah, you can Yes, deal ma'am. with it. You can deal with it rather than so you can respond to it. So, Yes, ma'am. according to you, hmm, Ma'am, it's good, but if someone is behaved properly and is not misbehaving, it is better. be preventive. Yes, ma'am. Good. And Okay, Tia, ma- yours? हाँ जी, हाँ और Vidhi ma'am, और the Ma'am, I other, would like to share Vidhi, one with second, one second. Vidhi, you want to say more? yes, ma'am. Ma'am, we learned the stereotypes. Ma'am, you can't actually finish the whole population like that, because actually there are too many in our country, especially. So these stereotypes are not like born people who are stereos. They're actually converted into such people because of their surrounding, from their childhood where they have grown. So to prevent them from being this, it is better to make a good environment which tells them to treat and behave properly with women, so that they don't become such people in the future. Good. Very good point. Tia, what is your I point? would like to share my thoughts on equality and the thought that men should dominate women, which is completely wrong. Some people say that men should dominate, but that is wrong. We are all created by God. We are all first human, then we have categorized into male and female. Men do not have any right to say about women what they should do and what they should not do. Some men criticize women that they do not have the skill of business or strategizing, organizing or stuff. But that is also proven wrong, because I would like to share some real fact that the computer algorithm is created by women, and not only that, the first Monopoly game was also created by women. So women are equal to men in all fields. In athletics also, you can see many women have won the gold medal, many awards they have gotten. So you Women are are doing saying that wonderful work. they should stop saying when men and women both are equally achievable, each Ye- achieving. Yeah. Any other yes, bitter? women should not be stereotyped because they have much I've more understood. capable. Any other bitter? Any other point? Yeah, the other point that I would like to say about domestic violence, in household only the woman is not getting treated good. What expectation she will carry around for the outer world? So it starts from the home. If a woman is treated good in home, she would be feeling more happier and more supported to do work outside. So the domestic violence should be stopped, and any person who tries to do it should be punished harshly. uh, that's all I would like to say. Excellent. Thanks. Excellent. Okay, Deborah, your turn. Yes, ma'am, am I audible? Yes, you are audible. Oh, yes, ma'am. Ma'am, in India registers around 49 cases of crime against women every year. 77% of women never sought any help for the violence inflicted on them. A girl's safety starts at her home. How the parents respect and love each other nurtures the children to have a healthy relationship and respect for the opposite gender in a society. In the words of Dr. Kiran Bedi, ma'am, values cannot be trained, they can only be caught. Create situations in which you can catch values. Every girl should be empowered to love and respect herself from within than relying on false praises and falling into the wrong relationships that may culminate into violence. Cybercrime against women and children has increased by 28% during the pandemic. These are a few rules to follow. Please do not share your personal information with fraudulent phones, emails, or websites. A victim
of cybercrime should notify the local cyber cell or the nearest police station if you become a victim. Please share it with your parents, guardians, or health and wellness teacher and receive help. Aparna Rajwat started the Pink Belt Mission, an NGO based in Agra which empowers women across the country with tools to stay aware, fight violence, and respond to the challenges. By following the Beti Bachao and Beti Padhao scheme, we can make our society a safe place for women. In the words of Savitribai Phule, India's first teacher, sit idle no more, go get an education, end misery of the oppressed and the forsaken. Thank you. Very well done, good, Deborah. Done very good research. Now, children, we got a few minutes only left for the show to be over. We can have the summing up briefly by Saina, but I will give you 5 minutes only to quickly ask your questions, and I'll give you very brief answers. Then we do a short summing up and finish the show because our show time is coming. So quickly, Kaushal, आपका question. No, ma'am, I don't have any question. I don't have any question. Okay. Muskan, आपका कोई question? Ma'am, yes. I want like still casting. आपका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा? Vidhi, any question, beta? Ma'am, is still casteism is important in education policy. Casteism is important in what? Education policy. Betty, education policy is dependent on these people who were earlier deprived sections of society, and to make the situation, to correct the imbalance and the injustice which is of the past. That's what this reservation is based upon. Reservation is not caste based, it is kind of deprivation based. तो अभी आपने देखा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड को भी इन्होंने ऐड किया है, जो गरीब क्लास है लेकिन लायक है, उसका पैसा नहीं है लेकिन लायक जरूर है, इसीलिए बेचारा लड़का लड़की रुक रहा है. दिस इज द बेसिस ऑफ द रिजर्वेशन. एंड फॉर सम टाइम इंडियन सोसाइटी सब इक्वल नहीं है, सब बहुत अलग अलग, इसको एफर्मेटिव एक्शन भी कहते हैं. तो ये पार्ट ऑफ एजुकेशन. नाउ ऑब्वियसली इट हर्ट्स, लेट्स से इट हर्ट्स, इट टेक्स away the seats of those who are meritorious, who got the money and who got good education and they worked hard, let's say poor but worked hard, yet their seats are gone because of the reservation, almost like a 49% reservation. So ये policy है, इंडिया की सोसाइटी की हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री की गलतियों को सुधारने के लिए ये रिजर्वेशन लाया गया है. इसको बहुत समय लगेगा ठीक होते, इसको चेंज होते. Okay, next, Tia, आपका कोई question? Quickly. Ma'am, I would like to ask that how do we handle stress or problems created in life as a student? बहुत इंपॉर्टेंट है पहले समझना. देखो हर एक की लाइफ डिफरेंट है, हर एक की प्रॉब्लम्स अलग है, हर एक के कंसंट्रेशन लेवल्स डिफरेंट है, हर एक के घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, हर एक के सब्जेक्ट्स की इंटेलिजेंस अलग अलग है ना, हर एक का स्कूल डिफरेंट है, हर एक की लाइकिंग्स ऑफ द सब्जेक्ट अलग अलग है, हर एक के एक्सेस टू रिसोर्सेज भी अलग अलग है. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये समझना कि तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या, एज अ स्टूडेंट प्रॉब्लम है क्या. आप ये नहीं कह सकते मुस्कान की भी वही है, कुछ कौशल की भी और नहीं, जरूरी नहीं है. आपकी प्रॉब्लम क्या है पहले उसको समझना जरूरी है. आपकी प्रॉब्लम क्या सब्जेक्ट की है, क्या आपके प्रॉब्लम टीचिंग से है, क्या आपकी प्रॉब्लम घर के एनवायरनमेंट से है, क्या आपके स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, प्रॉब्लम क्या है. सो अगर आप अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और फिर वन बाय वन उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब होगी सॉल्व. हर की प्रॉब्लम देखो, आपने सभी ने अपने अपने तरीके की बातें बोली है ना, कितना डिफरेंट, क्योंकि हर की थिंकिंग अपनी, पर्सपेक्टिव अपना अपना. तो तिया, द ओनली वे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज अ स्टूडेंट इज लिस्ट आउट व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स. Then you ask, see, who can solve this problem? Is it you yourself? Or is it your parents? Is it your teachers? And then you go and ask for help. You must ask for help. कभी हेल्प से घबराते नहीं है कि मैं पूछूंगी तो कहेंगे उसको बुद्धू है, इसको आता नहीं है. नहीं नहीं, you must go back to your teacher and ask for help.
गो बैक टू योर पेरेंट्स, आस्क फॉर हेल्प। यही तो उम्र है हेल्प मांगने की। हाँ भैया, पिया बोलो। Yes, ma'am. Thank you. ये बात बेटा, आपको हेल्प मांगने में शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, शाय नहीं होना। टीचर के पास जाओ, फ्रेंड नहीं, नॉट फ्रेंड, पेरेंट, टीचर और एल्डर ब्रदर सिस्टर और अ ग्रैंड पेरेंट, जो आपकी बात, जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन है। किसी के साथ तो कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. वो ढूंढो। मेरा कम्युनिकेशन किसके साथ है ज्यादा? मदर, father, brother, sister, relative, uncle, maybe you're very close to a relative of yours, you do not know. तो उनको बोलो मेरी ये प्रॉब्लम है पढ़ाई में, एज अ स्टूडेंट मेरी पढ़ाई में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं कैसे डील करूं? तो कहेंगे ये वाला हिस्सा तो मेरा प्रॉब्लम है, वो इसको मेरी कंसंट्रेशन नहीं अच्छी, या मेरी मैथ, मुझे सब्जेक्ट नहीं अच्छा लग रहा, मुझे चेंज करना सब्जेक्ट, या मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ट्यूशन चाहिए। You have to understand your problem first. So what you do is take a piece of paper and write down what are your problems and which is that problem you can solve and which is the problem who can solve. That's important. And then start taking small steps towards that. Understand? However, if you need any student counseling, any other problem, you can call back Shakira from our demonstrative learning, or call Saina. We can get you student counseling help. We can help Thank you. you, ma'am. Okay. So Saina, you can call up on, write on email, communications@demonstrativelearning.com. Ami, I think the electricity is gone at your end. Children, we'll do a quick sum up. I think the electricity has gone at ma'am's end. Anything you wanted to ask, or should I just give you a little sum up? Should I give you a little sum up? Okay. Beta, we've spoken intensely about this subject. You're young, you're growing. We wish you very well. देखो, different realities तो coexist कर रही हैं, है ना? There are different kind of realities that are coexisting at the same time. So we also have to deal with them in our own way, play our own part. So सब कुछ black and white नहीं है, हर एक की reality अलग है, हमने अपना part play करना है in that reality. ठीक है? कोई किसी से कम ज्यादा नहीं है, कोई किसी से कम ज्यादा बना ही नहीं है. Mother Nature does not do that. Again, play your own part. खुद की प्रतिभा को पहचान के आगे बढ़ो. Mother Nature has never discriminated. कोई किसी से कम भी नहीं बना और कोई किसी से ज्यादा भी नहीं बना. ठीक है? लेकिन हाँ बेटा, कुछ रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे समाज में, हम उनसे मुंह भी नहीं मोड़ सकते. अच्छा, अब एक और बात आपको बोलूंगी. हर चीज में लड़का लड़की की बात नहीं है, बात है हमारी सोच की. कई लड़कों की सोच बहुत अच्छी होती है, कई लड़कियों की सोच ठीक नहीं होती है. तो बात लड़का और लड़की की नहीं है, बात है हमारे सोच की, हमारे कर्मों की, हमारे नजर की. उस पे जरा ध्यान दो. प्ले योर ओन पार्ट. मैं गुजारिश करूंगी हमारी टीचर्स से, हमारी मदर्स से, हमारे घर की बड़ी लेडीज से कि एक और मूवमेंट आने की जरूरत है जहां पर औरतों की शुभचिंतक बन रही हैं सही मायने में.
ये जैसे आप बड़े होगे थोड़ा समझोगे इस बात को। मैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारी ऑडियंसेस को भी रीच आउट करती हूँ, हमारे बड़े लोगों को भी रीच आउट करती हूँ। एक बहुत बड़ी मूवमेंट की जरूरत है कि सही मायने में एक ऐसा समाज बने जहां औरतें औरतों की शुभ चिंतक हैं। एक और बात, इट्स टाइम वी स्टार्ट एजुकेटिंग आवर सोल। एक बड़ी सुंदर कहावत है दैट educating the mind is not education. The real education is educating the heart. I want to take it a step further. We need to start educating our soul. क्योंकि जब तक एक पुरुष और एक औरत के अंदर उसका ज़मीर जिंदा है, then we will have a society जिसकी conscience level बहुत हाई है। आजकल प्रॉब्लम तो ज़मीर में आ गई है ना, प्रॉब्लम तो अंदरूनी है, प्रॉब्लम तो ज़मीर में आ गई है। तो ये भी धीरे धीरे आप इस बात को समझोगे। आप सबको अपने अपने तरीके ढूंढने, आपका उठना बैठना, आपके तौर तरीके सोच समझ के करना, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। बेटा, एक हिंदी में कहावत है, आ बैल मुझे मार, वो मत करना। क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत रियल समस्या है। पर बच्चों, आ बैल मुझे मार मत करना। और एक और बात बोलूंगी आप सबको, चाहे एक पुरुष हो चाहे एक लड़की हो, किसी भी जेंडर को हक नहीं बनता कि वो अपने जेंडर का इस्तेमाल गलत तरीके से करे। अपने जेंडर का गलत इस्तेमाल करना ना पुरुष का हक है ना औरत का हक है। तो हमने ह्यूमन स्पिरिट, ह्यूमन सोल की जागृति की बात करनी है। बट ऑल ऑफ यू प्ले योर ओन पार्ट। At least start by playing that part in your own life. तो ये सब चीजों पे विचार करना and raise your consciousness. That is what we need as a society. ठीक है जी, खुश रहो, खुश रहो जी। Okay, can I do the summing up? I lost the connection in between. जी जी। But आप लोगों ने, बच्चों ने जो बहुत अच्छे, you given all very good ideas. We might put these ideas without quoting you specifically, as the children are saying, as the teenagers are saying. We might just do a little compilation and put this as a piece. I think it's very useful. You all contributed exceedingly well. Want to thank Muskan, Tia, Deborah, and whoever was there with us. Vidhi's gone. Yeah, Vidhi's lost. We lost Vidhi today. We've had problem with the internet. Even I lost you in between. So I want to thank Deborah, Vidhi, Tia, Muskan, and Kaushal. I want to thank you. Stay connected in the BR group as you've been explained. आपके एक दो के क्वेश्चन रह गए थे। किसका रह गया था? किसी का क्वेश्चन रह गया था? Or we can go ahead now. Can you hear me? Are you hearing me? Okay, so we go ahead and say thank you very much, and we'll stay connected. God bless you. All the best. Thank you for your contributions. Thank you. आप सबका शुक्रिया जी, थैंक यू। जय धारी माँ बच्चों, ठीक रहो, हंसते खेलते रहो, खुशियां मिले, खुश रहो।